Hello guys, welcome back to the channel. So let's start with the analysis video for 19th of August 2023. So no Supreme Court stay on the publication of the Bihar caste survey data. So इसके context में जो हमारे लिए important है and in terms of analysis हम पहले देख चुके हैं कि firstly तो caste based survey किया जाता है वो क्यों किया जाता है उसके पीछे का purpose क्या है and again स्टेट स्पेसिफिक सर्वेज क्यों किए जाते हैं एंड जो लेटेस्ट डेटा है ऑफ द कास्ट सेंसस वो हमारे पास 2011 का है. सो उसके अलावा वी डोंट हैव एनी pan India level latest caste based survey which has happened after 2011. So these are certain things and again इसको legally challenge भी किया गया था but now Supreme Court it has lifted the stay and the state of Bihar can carry out this caste based survey. So your caste is known to your neighbors, says Justice Sanjeev Khanna, asking how survey violated the privacy of the respondents. मतलब legally इसको challenge किया गया था saying कि it would lead to violation of your right to privacy. But सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि आपके नेबर्स को भी पता होता है कि यू आर फ्रॉम विच कास्ट. तो अगर कास्ट बेस्ड सर्वे में आपकी कास्ट रिकॉर्ड की जाएगी, कास्ट डेटा कलेक्ट किया जाएगा, तो आपकी प्राइवेसी कैसे वायलेट हो रही है. So जो petitioners lawyer है they said कि they insisted on caste. It is not today's thinking. But यहाँ पे again we are not looking at subjectively. Objectively जो data collect किया जाएगा उसका कहाँ utilization है and utilization जहाँ किया जाएगा उसकी क्या utility है. So that is much more important for us to understand rather than going into कि आज की thinking है या नहीं है. So 3 people have been killed in Manipur's Naga-dominated district. So still violence continues. And in the fresh incidents of violence, 3 village volunteers, they were killed by unidentified armed miscreants and in a Naga-dominated area. So innovations in healthcare, it needs to be there for the public good. तो और क्या इनोवेशन किए जा सकते हैं इन आर हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आपको सोच सकते हो. इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कैसे हेल्प कर सकता है. सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. सो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ अगेन एक वन ऑफ द इनोवेशंस हैं. इट विल अलाउ द कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ टू क्लोज द गैप इन हेल्थ केयर डिलीवरी. सो इट विल हेल्प take us one step closer to the goal of achieving universal health coverage. Now, universal health coverage को achieve करने के लिए क्या क्या innovations possible है, even technologically, scientifically. So वो आप सोच सकते हो. So holistic approach definitely that is required, and in India we are following it. We are following an inclusive approach. So that's there. And even in terms of infrastructure, healthcare infrastructure, promoting the traditional systems of medicine. So कल हमने देखा था even WHO has said कि countries they need to promote, they need to spread the awareness about the importance. They need to revive the importance of the faded, we can say, usage or application of the traditional medicine systems in different countries. सो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो पीपल फॉरवर्ड करते हैं अब्यूजिव पोस्ट, इवन दे कैन नॉट एस्केप द लायबिलिटी. ऑब्वियसली अगर आप किसी पोस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हो एंड दैट इज प्रमोटिंग अब्यूजिवनेस, तो यू ऑल्सो हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज. एंड अगेन इफ यू आर इन्वॉल्व इन सच एक्ट, सो यू कांट एस्केप द लायबिलिटी. So this has been clearly stated by the Supreme Court. Now let's move forward. So Chandrayaan-3 lander, it has successfully undergone the deboosting according to ISRO. And every day we're getting the updates about the latest developments around it. So issue is not about India की GDP क्या है, किस रेट से ग्रो कर रही है. It is about JDP. JDP means मतलब GDP is gross development product, so JDP is job development product in a way. तो यहाँ पे we are talking about the employment sector, the job creation.
So let's understand it in an objective manner. So participating in the debate on the motion of no confidence of Parliament last week, we saw Union Finance Minister. She waxed eloquent about India's GDP, which is growing in double digits. So Indian economy being the world's fastest, and also ये भी highlight किया गया था कि glowing reports जो foreign institutions promote कर रहे हैं, publish कर रहे हैं about the इंडियन इकोनॉमीज ग्रोथ, चाहे आप आईएमएफ की बात करें या मॉर्गन स्टैनली की बात करें. सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने पॉइंट आउट किया जो हमारा एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट इज अंडर द यूपीए, जो अगेन ये थोड़ा पॉलिटिकल है, जो मतलब वी कैन से कि 2000 से 2014 तक जो जीडीपी ग्रोथ है एंड आफ्टर 2014 जो जीडीपी ग्रोथ रहा है आज तक, दैट हैज बीन हायर. सो इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी ही टू हैज weighed in about कि इंडिया का जो abysmal economic performance है by giving suggestions largely outlandish to improve GDP growth. So whole debate जो इंडिया का है amongst the leading economic policy makers, it has revolved around कि किसकी GDP higher है, मतलब political terms में different time periods की हम बात करें तो हमेशा debate यही रहता है कि GDP कौन से time period में ज्यादा rate से grow की. But it is like no one has really asked the question whose GDP growth is it in the first place. So किस चीज की GDP growth की आप बात कर रहे हो. So issue of job potential मेन इशू यही है. सो हम बात करते हैं जॉबलेस ग्रोथ की, तो अगर हम बोल रहे हैं कि जीडीपी इज ग्रोइंग बाय गुड नंबर, लाइक द इवन द ग्रोथ पोटेंशियल रिमेन्स गुड, सो वो हम कहीं ना कहीं हमारे लिए उसका बैकग्राउंड समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ जस्ट seeing and stopping at कि yes GDP is going good, it is growing and वो हो गया आउटर पिक्चर. हमारे लिए बैकग्राउंड समझना भी इम्पोर्टेंट है. तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है कि ग्रोथ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की वजह से हो रही है, किस वजह से हो रही है आपको वो पता होना चाहिए. जीडीपी ग्रोथ कंजम्पशन ड्रिवन डिमांड की वजह से हो रही है, या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, या ओवरऑल अगर आप बोलो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही है इंडिया में. सो इशू ऑफ जॉब पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इफ इंडियाज इकोनॉमी बहुत रैपिड रेट से ग्रो हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में यही रहेगा कि जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट भी उसी रेट से या हाई रेट से ग्रो कर रही होंगी, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. सो we see कि if India's economy is growing so rapidly, then why is the demand for minimum wage work जो MG नरेगा स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जाता है, that is also growing so fast. So इसके बीच में जो रिलेशनशिप है, अगर सपोज करो जीडीपी अच्छे हेल्दी नंबर से ग्रो कर रही है तो जो डिमांड है फॉर द वर्क अंडर एमजी नरेगा वो कम होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे एरियाज में जॉब क्रिएट हो रही है. बट ऐसा नहीं है, इसका ऑपोजिट हो रहा है. बट अगर हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट भी अच्छी है हमारी जीडीपी की और एमजी नरेगा में जो वर्क डिमांड है वो भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि लोगों के पास और कोई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम है ही नहीं, देन ओनली दे आर गोइंग बैक, दे आर डिमांडिंग वर्क अंडर एमजी नरेगा. तो कहीं ना कहीं दिस इज नॉट शोइंग अ गुड एंड अ पॉजिटिव पिक्चर द ग्राउंड लेवल जब हम अपने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करते हैं. सो जब हम बात करते हैं एवर सिंस 2014, वी सी की इंडिया का जो रियल जीडीपी है दैट इज ग्रोन at an annual rate of 5.3%, but जो demand है for the engineering work, it has also grown at 5.4% every year. So that is when India was apparently the fastest growing economy in the world. More and more people, they were also clamoring for engineering work. So अगर हम बोले कि economy is doing well, it should be creating many jobs, which should then lower the demand for engineering work. तो ये मैंने आप लोगों को already जो relationship explain कर दिया है. So clearly this is a big dissonance between GDP growth and its translation into actual job creation and incomes for the people. So आगे अगर हम और बात करें, even the jobs जो create की जा रही हैं, they tend to exacerbate India's social fissures. मतलब कि जो jobs even create भी की जा रही है उसकी वजह से we are seeing inequality increasing. And स्पेसिफिकली अगर हम फॉर्मल सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट की जा रही है उसकी अगर हम बात करें, सो इट प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द वर्कर्स अंडर एमजी फ्रॉम देयर फ्रॉम द ऑपरेस्ड कास्ट, द दलित्स, ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड कास्ट. सो एमजी नरेगा में जो लोग वर्क डिमांड कर रहे हैं दे आर ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर या हाईली स्किल्ड पीपल नहीं है, they belong to Dalit, मतलब backward classes. So if we go by the analysis of data of RBI from 1980 to 1990,
So every percentage point of जो GDP growth हो रही थी, it produced 2 lakh formal jobs. So this is the relationship between GDP and कितनी number of jobs create की जा रही थी. So this is for the decade of 1980 to 1990. So this number, it was half to just 1 lakh for every percentage of GDP growth. अगर हम 1990s के decade की बात करें, and halved further in every subsequent decade. तो मतलब consequently हर decade में 1% of GDP growth के बाद ये number half होता गया. So this is an alarming decline in the number of jobs जो create हुई with every percentage of GDP. So this is a function of the poor quality of GDP growth जो हमने इंडिया में देखी, and rapid increase in productivity, extreme automation. So to be clear, जो ये phenomena है, it is not unique to India only, and this is a kind of global economic problem है. So this is not something which is unique to India. So it's important कि हमें अपना जो focus है, we need to shift that on the job intensity of the economic initiatives rather than merely chase the headline GDP growth. So instead of just running after कि हमारी GDP growth rate जो है वो बहुत अच्छे नंबर से grow होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, we also need to focus at the same time कि हमारी जो job intensity है, जो भी हम economic initiatives ले रहे हैं, जो भी schemes आ रही है, policies आ रही है, उसके पीछे जो job intensity है, job creation intensity है, उस पे हमारा focus होना बहुत important role play करता है. So for example, यहाँ पे example भी दे रखा है, that is not like will not go through it. जो मेन आइडिया हमें वो समझना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पे, इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, एंड देन व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व दैट. So mines and minerals build India's future. अब इसके कॉन्टेक्स्ट में let's understand जो भी जॉब क्रिएशन वाली बात हम कर रहे हैं. So in this context we see that जो new mines and minerals development and regulation amendment bill अभी introduce किया गया, it can be a potential booster shot in India's economic arm if it is administered properly. Now how this can help is the question. So the world we are seeing right now, it is in the midst of an inevitable transition to electric mobility. So electric mobility की हम बात कर रहे हो, we are trying to promote more and more sales of electric vehicles. So electronic chips, semiconductor chips जो है उनका role बहुत ज़्यादा important हो गया. There we can say become kind of strategic access to those semiconductor chips, and we are also having dedicated semiconductor mission also. We are trying to, we have the vision of being the semiconductor hub. So apart from this, जो बाकी equipments हमें चाहिए for the production and manufacturing of the electric vehicles for this transition, obviously हमें कुछ critical minerals है जिनका access होना important है. So that's how these things are created with this new mines and minerals amendment bill जो अभी recently introduce किया गया. तो कुछ ऐसे critical minerals जिनका access हमारे लिए important, access and availability important है, that includes lithium, cobalt, graphite and और जो बाकी rare earth minerals हैं. So हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि जो minerals है, these are the foundation for the whole electric mobility supply chain, which countries such as China, they are pursuing aggressively. So self-reliance and not dependent on the imports for such critical minerals is the key ahead. So यहाँ पे again बहुत ज़्यादा job potential exist करता है. So this is one solution जो हम बोल सकते हैं. We can cite this in the answers as well. Apart from this, let's see, यहाँ पे minerals की बात की जा रही है. So again, large number of jobs can be created both local and low skilled areas में, and it can also be socially more inclusive by absorbing large number of people from even the oppressed caste. So oppressed caste basically जो ये वही we can say group है जो लोग ज़्यादा demand कर रहे हैं work under MG नरेगा. तो main हमें यही सोचना है कि how can we attract या how can we create jobs for this particular group. So this is one possible solutions. And apart from this, it's important to change the discourse here. So it's very important for the political leaders to change the nation's economic discourse and abandon this blind quest for headline GDP growth. So we need to go into the details of GDP growth, into the specific areas जहाँ पे we are actually witnessing growth, and जो और potential areas हैं वहाँ पे उसको explore करना और important हो जाता है. So
Here we complete this article. Let's move on to the next topic. So suicides being committed by the students. So we see 25 student suicides since 2018. They are ragging related. So how can this be stopped? So UGC has basically said this thing in an RTI response. The 25 suicides which have been committed since 2018 are because of ragging related issues and reasons. So commission का कहना ये है कि महाराष्ट्र, Tamil Nadu, they have reported 4 deaths each of these 25 cases. 8 were reported in 2018. This is the data. So there is already, we are having anti-ragging cell, which serves as a bridge between students and the authorities. So complaints जो receive की जाती है, they are escalated for timely action as per this, as per the UGC chairman. So apart from this, और क्या किया जा सकता है? That is important for us to ponder over. Apart from this anti-ragging cell, and at the same time ensuring even this is functioning in a proper time-bound manner. And then again, we can also work upon awareness generation among students, teachers, and parents about mental health and stress management. कैसे किया जा सकता है? Identifying the signs of distress so that your family can help you, peer group can help you. Then again, this is related to suicides. Anti-suicide devices, they are going to be installed on ceiling fans. So worried by a spate of suicides by hanging. So authorities in this coaching hub, they have taken a desperate measure, ordering hostels to install a spring device on ceiling fans to stop students from taking their lives. So specifically, अगर हम कोटा की बात करते हैं तो वहाँ पे obviously we are again, this is one of the issues of student suicides. So ceiling fans में anti-suicide device kind of a spring है जो install किया जाएगा so that students, they are not able to take their own lives. So business page पे we see some signs of revival amid the trade slump. So investment related imports, they have picked up significantly, even as we are seeing कि जो merchandise exports हैं, they have contracted, and we are seeing growth in the core imports on a seasonally adjusted basis. That has also led the fears of slowdown in the domestic demand. So domestic demand इतनी problem नहीं है हमारे लिए, that remains robust. हमारे लिए जो कंसर्न है एक्सपोर्ट सेक्टर है, एंड ऑब्वियसली दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द ग्लोबल डिमांड. तो उसको कैसे बूस्ट हम कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. So RBI has told the lenders not to levy the penal interest rate on the borrowers. So another fresh guidelines to the banks by RBI, NBFCs, and other lenders to ensure the reasonableness and transparency in disclosure of the penal interest rates. So अगर suppose कोई default किया जाता है by the borrower, या there's non-compliance in terms of paying your EMIs or your due amount, तो penal amount of interest rate impose किया जाता है over and above जो interest rate already आपको pay करना होता है. But it has been witnessed कि जो lenders हैं, जो banks हैं, they have been misusing this measure of levying the penal interest rate. Coming to Financial Express, so see import licensing global firms, they seek US government intervention here.
So this is for the tablets and the PCs. मतलब दो options अवेलेबल है फॉर इम्पोर्टिंग, या तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज आप इम्पोर्ट नहीं कर पाओगे. सो दिस सेज कि इंडिया का जो डिसीजन है दैट इज इंटेंडेड टू फोर्स पार्टिसिपेशन इन द PLI. सो अगेन हमारे डोमेस्टिक सेक्टर के लिए दिस इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. ऑब्वियसली इट इज फॉर प्रमोटिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग. एंड अगेन जो PLI स्कीम है उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं जो फायदा होगा वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को जाएगा. So loan reset की हम बात करें तो RBI it gives borrowers more say. So what has been the decision? So every see कि at every rate revision जो किया जाएगा borrowers choose कर सकते हैं between floating and fixed interest rate. So policy may specify number of times borrowers they can switch during the loan tenure, and they should also get to opt for the enhancement in the EMIs or the elongation of the tenure. तो या बीच में मतलब you can get it changed even in between as well. So lenders, they should clearly communicate to the borrowers about the possible impact on the loan of change in the benchmark interest rates. No, obviously people they are not so aware कि जब interest rate changes होते हैं तो कैसे उनकी MIs के ऊपर impact हो रहा है. तो again here the lenders, that is the banks, they can even like obviously they can play an important role in terms of making the customers or the borrowers aware about की interest rate changes की वजह से अब उनकी EMI पे क्या changes या क्या impact होगा. वी आर सीइंग कि जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है, बट ओवरऑल हमने शेयर की बात करी थी कुछ टाइम पहले. सो दैट हैज बीन इंक्रीजिंग. जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स वो इंक्रीज हुई है. यहाँ पे आप शेयर भी देख सकते हो 76% से टुडे वी आर एट 87%. सो 87% जो हमारी क्रूड ऑयल नीड्स है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बट जो इंपोर्ट में ग्रोथ है वो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है. बट जो हमारी डोमेस्टिक ऑयल डिमांड है दैट हैज बीन इंक्रीजिंग. सो दिस इज द ओवरऑल सिचुएशन. एंड फ्यू डेज बैक वी ऑल्सो सॉ कि जो मोर देन 50% ऑफ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जा रहा है बाय रशिया दैट इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू इंडिया. So given जो भी experience रहा in case of regulating the impacts of COVID-19, our Prime Minister says that we need to be prepared for the next health emergency. So again, आपको सोचना ये है कि what were the lessons out of this COVID-19 pandemic for us? So what is 3D printing? Picture में आप देख सकते हो this is a post office जो 3D printing से construct किया गया है. So it has been constructed in Bengaluru. एंड एक रोबोटिक प्रिंटर है जो 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है which deposits concrete layer by layer in accordance with the computerized 3D model drawing input. So this you can see how modern technology. Again इसके क्या benefit होंगे? Obviously least cost and cost efficiency में this would be improving. Apart from this, less time it would be taking in construction, less labor hours would be required. So when we're talking about our diamond industry, so it has been impacted because of the Ukraine war, and jo demand hai from the Western world that has also been slumping, that has been declining. So diamond industry is going to now focus upon the domestic demand, domestic sector, and और क्या new export markets हो सकती है, so उसको explore करना. That would be the priority. So outcome of the ongoing discussions on prospects of diamond industry in Russia is unclear at the moment. So can Russia be one of the potential markets for the diamond exports or not is being still delved into. So government and the industry, they are trying to work out the modalities of a foolproof method of assessing traceability of the diamonds.
So new emerging markets also includes the Asian markets to unlock the untapped demand for this industry. So Myanmar's loss, it may be India's gain as labor issues grow. So here we see one of the designer H&M. तो यहाँ पे we have one of the examples कि जो H&M brand है, they have decided to move out of the Myanmar country. They've decided to move out their garment factories from Myanmar, and they have put the spotlight on neighboring markets like India. So here we know about the domestic situation in Myanmar, so obviously that is not suitable for the businesses to function in a smoother manner. So जैसे कि we are seeing China +1, so this is kind of, we can say, Myanmar +1 strategy. The factories, they are kind of shifting to other markets, to other safer places. So besides Myanmar, अगर हम apparel and fast fashion brands की बात करें, they are also sourcing from markets like Bangladesh, China, Vietnam, Thailand, Cambodia, Indonesia, Sri Lanka, and India, owing to the availability of labor. So this is one of the major factors when it comes to attracting them into the Indian market. Large base of small and medium large garment manufacturers also exist. Favorable policy है, affordable cost of production भी है. So all of these factors, they are there in India, and obviously it is favorable to them. So that's why they are shifting their bases to India and they're moving out of Myanmar. तो पीनल इंटरेस्ट रेट हम देख चुके हैं. आरबीआई ने इसको क्लियरली बोला है कि जो बैंक्स हैं वो पीनल इंटरेस्ट रेट को कंपाउंड नहीं कर सकते हैं. सो इट शुडंट बी समथिंग विच इज अनरीजनेबल. एंड अगेन जो बोरोवर्स हैं उनको इसके ऊपर क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दे नीड टू बी मेड मच मोर अवेयर अबाउट कैसे एक्चुअली हाउ इट फंक्शंस एंड व्हेन इट इज एप्लीकेबल. So should it be part of the citizens charter for the banks or not, comes that it can be one of the possibilities. And at the same time, RBI की जो guidelines है वो revise की गई है for IDF NBFCs. So infrastructure debt funds or जो non-banking financial companies हैं, they will now be required to have a net owned fund of at least rupees 300 crores. And besides, they should have a capital to risk weighted assets ratio of minimum 15%. So these are the part of revised guidelines for them. So firstly, जब हम बात करते हैं next health emergency के लिए, what are the preparedness level that we need to fulfill? तो उसके लिए obviously we need to ensure कि we have firms that can meet the medicine standards, and obviously the spike in the medicine demand specifically during such emergency times. And apart from this, how can we create our health system to be resilient? Again, वहाँ पे importance of primary healthcare बहुत important हो जाता है.
And resilience, that has turned out to be one of the biggest learnings of this time during जो हमारा COVID-19 experience रहा. Global health systems, they should also be resilient, and we must be ready to prevent, prepare, and respond to the next health emergency. So digital solutions and innovations, digital health mission is there, how we can use them as means to make our efforts to equitable and inclusive uh, healthcare system. So that's important. We are having Nikshay Mitras or the TB, the Friends for eradication of TB. So all of these things, they are happening. And what new must be done is something that you can think about, और क्या नया किया जाना चाहिए, so that we are better prepared. So according to two of the RBI studies, it shows कि जो हमारा economic momentum है, economic growth momentum है India का, that is sustaining. So that is not declining. Yeah, it is not, we can say, fading away. That is something that has been maintained on sustainable basis. So that is obviously something which is good as far as the functioning of Indian economy is concerned, given the global challenges. So we've been talking about हमारा trade कैसे perform कर रहा है. FMCG sales, it has also improved sequentially. तो वहाँ पे भी हमें improvement देखने को मिल रही है. Specifically, rural areas में the demand is growing and increasing. So cement consumption has also registered healthy growth, both steel and cement sectors में. तो even when you talk about the construction activities, so वहाँ पे भी the momentum is good. So जो concern है हमारे लिए, that is the extent to which a pickup in the investment is materializing. तो investment, how that is performing, वहाँ पे जो हमें increase देखने को मिल रहा है, how that is materializing. कौन से sectors में investment demand ज़्यादा increase हो रही है, that is important. Private sector investment increase हो रही है, आगे उसको हम कैसे sustain करेंगे, वो सोचना important है. So जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं, and again, being a voice of global south, it is a part of it. So BRICS, it should not spend energy on taking adversarial positions against the West. It should focus on representative economic governance. So कीवर्ड क्या है, representative economic governance, क्योंकि अभी ये बात भी चल रही है कि whether more countries they need to be made a part of BRICS or not. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रिक्स करेंसी होनी चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर भी सेपरेट डिस्कशन चल रहा है. सो 2001 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिसर्च हेड है फॉर द गोल्डमैन सैचेस, he was popularly known as Jim O'Neill. He authored a paper titled "The World Needs Better Economic BRICS." So he predicted कि जो four emerging economies है BRICS का जो part है, they would register GDP growth that would have important implications for ग्लोबल गवर्नेंस अरेंजमेंट. सो ये 2001 में उन्होंने बोल दिया था. एंड वी कैन से दैट somehow that we have seen that this has basically, it has become a reality. So थोड़ी ब्रिक्स की हिस्ट्री की बात की गई है. So recent summit जो होने वाला है, that is going to be there in South Africa.
So what is going to be the agenda this time is important. So China and India, they are at odds over the BRICS expansion, and prestigious US think tank declared, promoting the Indian Foreign Ministry spokesperson to clarify that there was no truth in that. So यहाँ पे basically again BRICS के expansion के ऊपर China and India, they are on opposite sides. So meanwhile, जो International Criminal Court है उन्होंने डिक्लेयर किया Putin is a war criminal for some actions in Ukraine. So ये भी बोला जा रहा है कि if he arrives in South Africa तो एक possibility है कि he might get arrested also. एंड कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जो ब्रिक्स है इट इज सीन मोर एज अ कॉम्पिटिटर टू G7 ग्रुप. सो जब हम बात करते हैं उसके शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी की इन पीपीपी टर्म्स इट स्टैंड्स एट 31 और वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 32%. और जब हम G7 की बात करते हैं तो इट इज एट 31.3%. सो इट इज समवेयर सेम. एंड ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं टुडे दे टॉक अबाउट एन ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम ऑल्सो, जो अभी मैं आपको बोल रही थी, ब्रिक्स करेंसी एंड ए न्यू रिजर्व करेंसी. So more and more countries जो है they are showing eagerness to join BRICS. They are excited to join BRICS. That includes Saudi Arabia, UAE, Egypt, Algeria, Argentina. So कुछ countries हैं जो BRICS join करना चाहती हैं. They have shown the willingness. South African Foreign Minister ने बोला कि that were at least a dozen request letters उन्होंने receive किए हैं regarding the countries who wish to join BRICS. कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो ब्रिक्स है एंड करंट ग्लोबल सिचुएशन अगर हम देखें तो इट इज सीन मोर एज एन अपॉर्चुनिटी टू पोजीशन द ब्रिक्स ग्रुप एज एंटी वेस्ट. सो इन पर्टिकुलरली चाइना की बात करें तो इट सीम्स कीन ऑन यूजिंग दिस फोरम टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस. सो even Putin, he wants de-dollarization to become the principal objective of the BRICS agenda. So ये सारे topics बहुत important है. De-dollarization के बारे में हम separately in detail discussion कर चुके हैं. So countries like India, South Africa, Brazil, they need to do a balancing act. हमें ये भी ensure करना important है कि अगर China चाहता है कि वो अपना influence increase करे तो that needs to be prevented या उसको भी balance करना important है. रशिया के अपने खुद के interest है बिकॉज ऑब्वियसली वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस इम्पोज कर दिए पोस्ट द यूक्रेन वॉर. तो रशिया चाहता है कि वो डी डॉलराइजेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि अगेन जो इम्पोर्टेंस है या डिपेंडेंस है अपॉन द यूएस डॉलर वो कम हो सके. And obviously this is to their BRICS, it is seen as a voice of global south. So global south multilateral reforms and forums की बात की जाती है. So let's see summit में क्या आउटकम निकलता है. एंड अगेन ब्रिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिक जो कंसेप्ट है कब फॉर्मुलेट किया गया, मेंबर कंट्रीज पहले कौन सी थी, उसके बाद वी सॉ साउथ अफ्रीका जॉइंड दिस ग्रुपिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट. So US, Japan and South Korea, they are going to enter into a security pact for the Indo-Pacific. So Beijing has criticized this meeting over the threats from China and North Korea. So US, Japan and South Korea, they are going to enter into a security pact. Obviously, we are seeing कि China की जो growing assertiveness in the Indo-Pacific, they are building artificial islands. Few days back, we saw also news about regarding the same thing. So countries that are stronger and the world will be safer as we stand together. And I know this is believed that all the these three countries, they share the beliefs. Biden declared at the start of the meeting with South Korean president and Japanese prime minister. So this has been one of the decisions by three of them. तो यहाँ पे अभी आज हमने देखा था कि इंडिया का जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है 3D प्रिंटिंग मेथड एंड टेक्निक के थ्रू उसको बनाया गया. तो एक्चुअली 3D प्रिंटर्स वर्क कैसे करते हैं एंड उनको और कहाँ पे यूज किया जा सकता है, तो उसकी और बाकी एप्लीकेशंस भी पता होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो 3D प्रिंटिंग क्या है?
एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, मतलब आप पहले एक लेयर को डिपॉजिट करोगे, उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर डिपॉजिट करोगे, तो लेयर बाय लेयर आप कंक्रीट मटेरियल को डिपॉजिट करते जाते हो, क्रिएट करते जाते हो, तो इस तरीके से एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है. So main funda of working is this. So how it is done? So to carry out 3D printing, one needs a computer that is connected to 3D printer. So all they need to do is design a 3D model of the required object on computer aid design software hota hai, CAD software, and then you need to press the print. So printer does rest of the job. Uske baad your task is done. So it works more of a kind of same way as a traditional inkjet printer जो work करते हैं, जो हमारे like households में everyday basis पे we're using, जहाँ पे जो nozzle है it moves back and forth while dispensing a wax or plastic like polymer layer by layer. So जो material है basically बस एक यहीं पे ये difference है, बाकी इसको ये layer by layer deposit करते जाते हैं. That's how we get the final product. So इसकी applications की बात करें तो obviously it can be used in diverse industries like healthcare, automobile and aerospace. So recently Chennai-based space tech startup Agnikul, they have also announced that it has developed a rocket with an entirely 3D printed engine. So you can see how we are seeing new developments using 3D printers. So penal interest rate के context में हम बात कर चुके हैं. We have seen this also कि borrowers they would be having the choice to pick from the floating or the fixed interest rate. India is making progress on prosperity. So weighted mean income जो है, you can see that's how it's been growing in terms of figures are in lakh rupees. So 13 lakh rupees is assessment year 2023 के figures की हम बात करें. So India is making remarkable progress on achieving equitable and collective prosperity with income tax returns data, which is showing that there is leap in the mean income over the last 9 years. So जो हमारी mean या जो average income है उसमें हमें growth देखने को मिली है. So SBI research report उसका कहना है जो हमारी weighted mean income है that is increased to rupees 13 lakh in the assessment year 2022-23 and this is expected कि by 2047 ये increase हो जाएगी by rupees 50 lakhs. So there would be a transition from the lower income group to the upper income group along with the rise in the number of tax filers also. मतलब expansion of tax base भी हमें देखने को मिलेगा. So that's all for today. Thank you so much for joining us in today's analysis session. And if you have any doubt, you can leave that in comment section. We'll get back to you, and do subscribe to the channel and like this video. Thank you so much.